all the people who are gonna give re-NEET tomorrow. I know it's hard. I know it's very hard. I'm also gonna give it. I'm not prepared. I don't want to give it. And I'll not edit this video, nothing. It's just my frustration out somewhere. I just want to let it out, everything, and just get rid of it, all the feelings, all the emotions. I guess I've seen the worst phase of my life throughout this NEET journey. And it's not just me. I think many of us gave up on so much of ourselves, I would say. Our health, physical, mental. We have given so much of things, our hobbies, our choices, our free time, and everything we have given to this one exam. Up to I just feel like not giving it anymore. I just don't want to give it. I somehow want to escape this pura NEET ka system. I just want to escape the whole thing. I just want कि कल का दिन skip हो जाए. And अभी it's like, so currently it's 5:35. कल इस टाइम पे क्या हो रहा होगा, I'm not sure, and that's making me more anxious. It's not easy, you guys. I have hardly slept like for an hour the whole time, and नहीं आ रही है नींद. बुक खोल रही हूँ, रोना जा रहा है. जो पढ़ा है वो भूल चुका है, जो नहीं पढ़ा है वो तो नहीं पढ़ा है. ठीक है. I was so mentally prepared for a drop, but this one system has played so well with our nervous system कि अब सब कुछ ऐसे लगता है कि but of course I know this one exam is not more than my life. it's just an exam, but that's what hurts the most कि बस एक एग्ज़ाम इतना इम्पोर्टेंट कब बन गया अपनी लाइफ का कि you have breakdowns and anxiety attacks because of this one exam and whatnot. So to all the people who are gonna give a re-NEET tomorrow, all the best, all the very best. Don't get this over your head. I know आप बहुत वीडियोस देख रहे होंगे अभी इस वक्त, मैं भी देख रही हूँ. We'll talk about it later. I'm mentally prepared for a drop and I'm gonna take a drop. बस कल का पेपर देते हैं, आराम से बात करते हैं, वीडियोस बनाएंगे. And I have a strategy for a drop too planned out, but I just want to escape tomorrow. Like मुझे चाहिए कल का दिन इस पूरी दुनिया से हट जाए, इस हिस्ट्री ख़त्म हो जाए कल के दिन की, and everything just pauses and just gets lost. And it's so traumatizing to the point कि I have thought of कि मुझे कुछ हो जाए, मैं गिर जाऊँ, कुछ ही हो जाए भाई, just to escape this one day. And all this leak, not leak, this postpone, रीनीट, वो टेलीग्राम पे पेपर, ये सब इतना ये ट्रॉमेटाइजिंग है, इतना आप चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते इन सब चीज़ों को. एंड इट जस्ट टेक सच अ बिग टोल ऑन अ हेड. इट्स सो इजी टू से कि आप देख क्यों रहे हो, आप इग्नोर कर दो. नहीं होता है भाई, नहीं होता है इग्नोर. बट इट्स ओके. All the best, all the very best to everyone. Just remember, this is just an exam. It is not worth your life. It does not decide your worth. It will never be able to decide your worth. You are much more worthier than this just one exam. Pass it, let it go. क्लियर हुआ नहीं हुआ, अच्छे मार्क्स से हुआ, बुरे मार्क्स से हुआ, थोड़े से रह गया, थोड़ा और मेहनत, लीव इट. You are so much worthier, and all the best. We are all riding in the same boat. तो जो भी होता है कल, लीक पेपर आता है कि नहीं आता है, कि वो सब फेक था, कि वो सब रियल था, सच में लीक हुआ था नहीं हुआ था,
कल ही पता लगेगा. We can't decide it today, but yeah, all the best and give your best. जितना तुमसे हो पा रहा है. तुम्हारा बेस्ट अगर एक चैप्टर अच्छे से करके गए हो वो तुम्हारा बेस्ट है ना, अगर इस मेंटल स्टेट में, तो आई वुड से वेरी गुड यार, वेरी गुड. आई नो जिस हिसाब से मेंटल स्टेट हो गया ना, इस हिसाब से एक चैप्टर करना इज ऑल्सो सो डिफ़िकल्ट. सो ग्रेट जॉब. आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड मिलते हैं कल.